अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो बारिशें हो रही है, 2-3 डेज से कॉन्टीन्यूसली बारिशें हो रही हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। तो आप बताइए इंडिया में कैसा मौसम है? सर्दी तो है ऑब्वियसली, लेकिन बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही? और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ L&T बिल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जब देखते हैं तो ये देखने में बहुत, ये तो सबसे बिग लगता है। ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो का मतलब इसमें बताएंगे कैसे वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप टाइमली वीडियो देखें। 3, 2, 1 स्टार्ट। A nation is as strong as it is united, as weak as it is divided. 71 years into independence, despite the obstacles in its way, India has clearly chosen the path of unity. When the British left India, there were 565 princely states with the option of joining India, Pakistan, or remaining independent. The mammoth task of integrating each princely state with the dominion of India fell upon the shoulders of one man, Sardar Vallabhbhai Patel, our first Deputy Prime Minister and Home Minister. He made the impossible possible. History called him the Iron Man of India, the Great Unifier. Fittingly, his birthday on 31st October is marked as Rashtriya Ekta Divas. It has been a long-standing dream of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to pay tribute to the great Sardar Patel. एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। On 31st October 2013, Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat, laid the foundation for the tallest statue in the world. The Statue of Unity. In keeping with its ethos, L&T took up the challenge head on. Located on Sadhu Bait, 3.5 kilometers from the Sardar Sarovar Dam on the Narmada, the Statue of Unity is an unparalleled confluence of engineering and art. इसलिए prominent भी है, नजर भी आ रहा है। Although L&T had successfully completed a plethora of prestigious projects, including power plants and commercial complexes, a structure of such scale was one of a kind. 182 meters. The honor of sculpting Sardar Patel's likeness went to Padma Bhushan awardee Shri Ram Sutar. The first challenge was to select an apt pose and expression to do justice to him. Although L&T's role was that of an EPC contractor, they still took active interest in the selection process. Extensive discussions with historians and experts ensued. After sifting through thousands of photographs, the team was unanimous in how the statue should look. Shri Ram Sutar created sculptures in varying sizes, honing every detail again and again. काफी सारे स्कल्पचर बनाए गए वाले। The latest 3D scanning techniques and computer-controlled production ensured accurate reproduction of minute details. Immense statues the world over have a broad base to achieve structural stability. Sardar Patel's statue was slated to be the tallest ever, and the greatest task was to achieve the design. His dhoti needed to end above the ankle. He is in a walking stance, thus the feet were not parallelly aligned. The assertive stride meant a gap between the feet. But the L&T team was equal to the task. Operations commenced in 2013 with exhaustive surveys of the land, riverbed, river and wind. This was followed by critical engineering design, a test of L&T's experience and technical capability.
In such a remote location, planning and logistics would be the key to all the operations. The Loha campaign was launched in earnest with a view to employing used implements donated by farmers around the country as a symbolic tribute. This iron forms the steel rebar in the raft foundation, a homage to the Iron Man of India. Iron Man A of reinforced India. concrete core, created with critical concreting methods, gave the structure a stable base. This would support the primary and secondary steel trussing. The bronze plates then covered the entire structure, forming the sculpture. Locally available sandstone and Baswara marble has also been used. Besides the statue, 3D printing other से key बना होगा, elements हाथ like से the बना। memorial and visitors center, main access bridge, bridges and roads उसका weight were भी made काफी to होगा। precision. The Shresht Bharat Bhavan is a 3-star facility for the tourists and guests. To bring socio-economic development to the region, students and vendors from nearby villages and towns were also trained for the project, thereby generating ample employment. The ultra-modern BIM technology for the design and project monitoring brought synchrony between the team and 30 consultants globally. The statue houses two 200-ton suspended tuned mass dampers to make it stable enough to withstand violent winds plus seismic activity. L&T created macro panel assemblies on site for the smaller micro panel bronze castings. This ensured speed and seamless assembly. Every plate was unique and RFID tagged and bolted in its place. As work progressed at blazing speed, the engineered structure transformed and the statue began to take shape. मशीन से बन गया है पार्ट्स फिर assemble होंगे। Designers, engineers, experts, specialists and workers from different parts of India have toiled night and day in a united effort unto one goal. The Statue of Unity, जबरदस्त। colossal enough to remind future generations of his epochal अमेरिका वाला कौन contribution. सा स्टैचू A है? structure as enduring as the Liberty. vision of Liberty था modern Indian nationhood. As Sardar Vallabhbhai Patel himself said, mankind without unity is not a strength. Yes. Only ऐसा when लग रहा है harmonized real by में। unity हाँ, वही तो। does it become a spiritual power. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत ज़बरदस्त लगा और देखने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि इस तरह का जब काम हो रहा होता है तो वो देख के जो है इंसान बहुत मोटिवेट होता है देख के, और वो मेहनत देख के बहुत अच्छा लगता है। और जो जज्बा था इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, एक पहले तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो थे वो स्टैचूज़ बनवाए गए, फिर सिलेक्ट किया पोज और फुट से लेके एक ही चीज़, उनकी धोती और पूरे उनका ड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो इंजीनियर्स और उसमें डिज़ाइनर सब शामिल थे। फिर उसको वहाँ पे फ़िक्स करना ताकि उसको विंड से कोई ख़तरा ना हो और बाकी चीज़ों से, और अपनी पोजीशन पे वो कायम रहे। इट्स अ बिग टास्क, मतलब कि मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया की जो वीडियोस देखी हैं उनमें ये बार बार नज़र आता था स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो और ये जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे बिग है, फर्स्ट नंबर पे है, तो इट्स अमेजिंग। ज़बरदस्त, दुनिया का टालेस्ट स्टैचू इंडिया में है। हमें नहीं पता था ये बात, ठीक है। जिसने वीडियो रिकमेंड की थी उन्होंने भी बताया था और कुछ वीडियोस में भी हमने देखा था। तो कितना वो नेचर के करीब लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि रियल में खड़ा है। बड़ा ज़बरदस्त लगा है। प्राइम मिनिस्टर जो थे मोदी, उनका ये ड्रीम था कि ये स्टैचू बनाया जाए और उनका ड्रीम पूरा हो गया। लगन और मेहनत के साथ जो काम किया जाए वो हो जाता है। तो और जगह भी उन्होंने बड़ी अच्छी सेलेक्ट की हुई है ना इसके लिए। सेकंड पे चाइना का है, फर्स्ट पे इंडिया का है और थर्ड पे है यूएसए में। तो बड़ा कमाल और हो गया। ब्राज़ील का था 4th नंबर पे। तो वही मैं कह रही थी, जगह बहुत अच्छी उन्होंने सेलेक्ट की हुई है कि साइडों पे जो है वो क्या उसको कहते हैं, नॉर्दर्न एरिया टाइप ही है कुछ, और बीच में वो अलहदा से स्टैचू ऑफ यूनिटी नज़र आता है। बहुत खूबसूरत लगता है। चाइना में जो है 153 मीटर है लॉन्ग है और ये है 182 मीटर लॉन्ग। ज़बरदस्त। होप सो इंडियंस जब जाते होंगे इस जगह पे तो जाके अपनी सेल्फीज पिक्चर्स वगैरह बनाते होंगे, बहुत अच्छी आती होंगी। एक चीज़ उन्होंने ना इस तरह से बनाई है कि धोती जो हो वो फुट से ऊपर हो। हालांकि देखें चलना तो नहीं है, अब स्टैचू है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को फोकस करके
और पिक्चर उनकी अच्छी वाली सिलेक्ट करके और ज़बरदस्त। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें तो देख के बहुत मज़ा आया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।